shortly. All right, so welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. And first of all, happy Independence Day to you all. And as uh, we are starting this webinar. First, for those who are joining us for the first time, quick uh, background that how this next 20 minutes we are going to spend. So initially, we'll talk about the performance during the week for key indices, sectoral indices, and the top gainers and losers from the Nifty 50 basket. And then we spend most time on outlook for the next week, means how you should position yourself for both Nifty and banking index, stocks to watch, sectors to focus on. So that we have planned to cover in next 15-20 minutes. In the last 10 minutes, any questions related to the webinar or any sector that you wish to to know more about, any particular theme, obviously we can discuss during the Q&A session. तो आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली वेबिनार में मार्केट मास्टर क्लास विद रेलिगेयर में। और उसके साथ साथ आप सभी को आज़ादी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वेबिनार में जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए कि नेक्स्ट आधे घंटे में क्या होने वाला है, क्या बात करने वाले हैं, तो बेसिकली हम बात करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस की। वो उस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे कि जो हो गया क्या होने वाला है, उस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। निफ्टी, बैंकिंग इंडेक्स, स्टॉक्स, सेक्टर्स, कहाँ पे फोकस करें, कहाँ पे नहीं, इस पे हम 15 से 20 मिनट बात करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा फीडबैक और फिर Q&A सेशन। कोई भी सवाल होगा आपका, स्टॉक स्पेसिफिक ना रखते हुए कोई सेक्टर स्पेसिफिक रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका टाइम ढंग से यूटिलाइज हो, मीन्स आप प्रिपेयर्ड हो नेक्स्ट वीक के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज तो एनीवेज यू कैन आस्क through your branches and business partner if you are associated with us. So let's utilize the time to prepare for a broader view on the market and the strategy that one should follow. So basis that the first quick disclaimer that it's not a trading or investment recommendation. So before making any decision based on the information shared, please check with your financial advisor. देखिए, ये कोई वेबिनार का पर्पस आप कोई स्टॉक्स या इंडेक्स की कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं। ब्रॉडली एक हम व्यू बना रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है, किस तरीके से हमको अपनी पोजीशन करनी चाहिए। तो जो भी आप पोजीशन लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही लें। So this is how the market closed this week. Means 1% gains for both Nifty and Sensex. All sectors in green, barring FMCG. And among the gainers, Apollo Hospital topped the list. Eternal, then Cipla, Tata Motors, Adani. Losing side, not much of decline, means Bajaj Finance top losers, roughly around 2% kind of a cut. Then we have Adani Ports, Indusen, Tata Steel, and HUL. So it was the 6th week, rather we were in 7th week, right? If I'm not wrong, yes. 6th week we have already seen declines. So it was the 7th week rather that market was consolidating. But we eventually managed to close in green. तो देखिए, ये 6 हफ्ते की गिरावट के बाद का पॉज है।
अभी रिकवरी कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। बट 6 हफ्ते लगातार गिरने के बाद ये 1% के गेन के साथ निफ्टी बंद हो पाई है। एफएमसीजी के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स ने पॉजिटिव साइड पे पार्टिसिपेट किया, और गेनर्स लूजर्स आप देख ही रहे हैं कि अक्रॉस सेक्टर आपको नाम नजर आ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक for both Nifty and banking index. So first we'll start with Nifty. So if you remember that earlier we used to talk about 24 600 450, this area, right? This lower band, cause earlier we were respecting this area as a key support area, but we couldn't sustain, and we drifted lower towards 24 350 zone before making this rebound. So is it decisive? Is it a clear trend or a clear sign of recovery? Not yet. What it means is that earlier also we had, days of rebound here, or a pause consolidation here, followed by trend resumption on the downside. So what it means is that yes, this week, after 6 weeks, we ended in green, but it's not outrightly bullish. It's just a pause so far. What level or trend would change our bias? This yellow line close to around 24 750 800 zone is the first line of resistance, which was earlier acting as a support, that is the 20-day MA. Once we cross this, then we can see some meaningful recovery towards 25,025 to 50 in the Nifty index. Okay. Downside, in case if we fail to cross this hurdle of 20 EMA, then again this previous swing low around 24 350, and then this long-term moving average 24 200. Broadly, what all the indications that we have? So indications are pointing towards possibility of rebound. And why I am saying this? Because if you see the last 4 or 5 days of trading, pattern in the index, starting from this day, last week Thursday it was a positive day. Then on Friday again market slipped lower. Then a strong start to Monday. Again Tuesday we were down. This kind of volatility or fluctuations usually result in short-term bottom formation. Okay, so again, it's a short-term bottom. Whether it's going to be a complete reversal, I'm not sure, but usually it forms when we have bottom very close. This kind of price action. We'll have a confirmation above 24 800 mark. This once we close above this yellow line. So as of now, tone is still cautious, but yes, chances of Nifty crossing 24 800 seems high, means possibility of recovery seems high. Provided anything comes up overnight in the next 3 days, that might change the direction, or again might result in further correction. Possibility of rebound is high at present in the Nifty index. So all you have to remember is 24 800 on higher side and 24 350 on the downside. This is the immediate band that we have. Extremes we all know, 24 200 the long-term moving average, and 25 250 this zone in the index. तो देखिए 6 हफ्ते की गिरावट के बाद ये वीक जो संभला है वो इतना आसान नहीं था। वीक वीक पे देखते हैं तो 1% के गेन नजर आते हैं, बट इसके बीच में जो वोलेटिलिटी हुई है
एक दिन ऊपर, अगले दिन नीचे, फिर अगले दिन ऊपर, फिर अगले दिन नीचे। ये सब कुछ हुआ है आपका 100 EMA के पास, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं। तो अभी के हिसाब से पॉज जरूर है, बट कोई मीनिंगफुल रिकवरी अगर दिखानी है मार्केट को, तो आपको इस येलो लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि 24,760, तो मतलब आप 24,800 पे ही मान के चलिए। इसके ऊपर अगर आप क्लोज हो जाते हैं तो फिर एक 25,000 लेकर 25,250 तक के मूव्स खुल जाएंगे बाजार में, और उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है बेसिस द रीसेंट प्राइस एक्शन। जो ये हाल फिलहाल में जिस तरीके से मार्केट में ट्रेड हुआ, उसकी इंडिकेशन ये कहती है कि कहीं ना कहीं जो भी मार्केट में पोजीशंस या फिर ट्रेडर्स कोशिश कर रहे थे किसी एक डायरेक्शन की, तो वो अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज दोनों साइड पे इन्होंने पोजीशन करके देख लिया, एक दिन नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जितने भी वीक हैंड से एटलीस्ट वो निकल गए। कंफर्मेशन आएगी बट 24,800 के ऊपर, उस केस में आपको वेट करना चाहिए कि उसके ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली आप फिर लॉन्ग साइड की एग्रेसिव पोजीशनिंग भी दे सकते हैं। अभी के हिसाब से थ्रू स्प्रेड्स मींस बुल स्प्रेड, रेशियो स्प्रेड्स के थ्रू इंडेक्स को ट्रेड करने की सोच सकते हैं, राइट। नाउ द critical sector in a current scenario, why I'm saying critical, because banking financials put together has roughly around 40% weight in the index, and then comes the IT basket, which is still not showing any sign of decisive reversal, though there were attempts of recovery, rebound every now and then, but it lacks sustainability. But banking, on the other hand, we are still seeing this, like, green line holding well. In the last 6 trading sessions, banking index has been maintaining above this green line. So in a way, if we are seeing that the pace of decline has reduced or Nifty is making any recovery attempt, banking has a big role to play, especially in current market scenario. Here, 54,900, you can write it down. This green line is basically the zone where we have the make or break area. If we hold above this level, then probably we can inch toward 55,800 and then 56,700 levels in the coming days, means this yellow line 55,800, and once we cross, then probably we are set for the again 1,000-point kind of a rally in banking index. If 54,900 breaks, then probably we are set for 54,000 also. Okay, so banking का रोल नेक्स्ट वीक में, आने वाले वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज कोई दूसरा सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि अभी मार्केट को स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे सके, बिकॉज ओवरसोल्ड पोजीशन है, पिटे हुए सेक्टर्स हैं, बट कहीं पे भी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें की स्ट्रेंथ दिख रही हो एक्सेप्ट बैंकिंग के। बट ये कब खराब हो जाएगा, जब ये ग्रीन लाइन के नीचे जाके क्लोज हो जाएगा, जो कि 54,900 के नीचे जाके एक बार क्लोज हो जाए, तो फिर मान के चलिए कि मार्केट में प्रेशर रहेगा, बिकॉज उस केस में करीब 900 पॉइंट का डिक्लाइन बैंकिंग इंडेक्स में हो सकता है, जहां पहला पड़ाव होगा, उसके बाद शायद कुछ और। तो ज्यादातर आपको क्लूज बैंकिंग से ही मिलेगा नेक्स्ट वीक कि मार्केट किस तरह से जाने वाली है, राइट। विद इन द बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में HDFC, ICICI, अगेन लाइक ये आज से नहीं बोल रहे हैं हम, ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया है, बीच में उनमें भी प्रॉफिट टेकिंग आई है, बट अभी भी वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। देन PSUs में आपका SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये कुछ एक कंसिस्टेंट और थोड़े से कंपैरेटिवली सेफ नाम लगते हैं यहाँ पे अभी के मार्केट सिनेरियो में।
right? So both indices is something that we have discussed. Now let's talk about stocks or sectors. So this week, like we were seeing in the presentation, the first slide, that pharma was among the top gaining sector this week. And Cipla is one reason that why it could manage to post such gains, because Cipla was up roughly around 5% in this week so far. So it is more important in a market like this, wherein we are not sure whether we are going to uh, resume recovery or extend recovery, or this negative tone might again derail the recovery attempt. Safety is more important, and Cipla gives you the same. Why I'm saying this? Because it's a very tight range consolidation. Means of late, earlier also we discussed about Cipla a few weeks ago. It inched higher, but it couldn't sustain. Means the breakout attempt, it was a failed breakout, followed by a decline. But the decline is restricted to the neckline area of this previous consolidation zone. Means the lower band of this previous consolidation zone. And this week again it resumed recovery. So here downside is capped. Means 1450 is something that it's holding very strong, right? So देखिए इस मार्केट में जहां पे कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं है कि आउटराइटली तेजी होना है, रिकवरी आना है, और रिकवरी में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, कि आप जिन स्टॉक्स में ट्रेड करें वो उनका कुछ मेजर डिक्लाइन ना आ जाए, कोई नेगेटिव सरप्राइज की वजह से या फिर कुछ भी, एटलीस्ट आप अपने साइड पे ये श्योर करें। तो सिप्ला एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर ही रहा था, बीच में एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ, वो फेल हुआ, दोबारा से डिप आया, बट इस वीक दोबारा से रिकवरी आई। तो ये क्या दिखा रहा है कि जिसने भी ब्रेकआउट में खरीदा होगा लास्ट टाइम वो एग्जिट हो गया, और अब ये स्टॉक तैयार है रिकवरी के लिए। ऐसा बहुत बार होता है कि ब्रेकआउट पहले फेल होता है, उसके बाद फिर आप जो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो स्टॉक चलना शुरू करता है तो फिर वो एक सस्टेन रिकवरी दिखाता है। तो फार्मा स्पेस में से सिप्ला एक ऐसा कैंडिडेट है दैट यू कैन कीप ऑन योर रडार फॉर द नेक्स्ट वीक, राइट? नेक्स्ट, इंडियन होटल. So this space of late, in fact in the last several months, we are seeing relatively higher strength. Okay, and Indian hotel, though it didn't participate much on the upside, but the downside was also capped during this entire period. And as you can see in the chart itself, it's a very tight range consolidation that the stock has been experiencing, with some signs of recovery or a reversal after almost this 7 to 8 month of consolidation. So here again, same logic, that the focus should be more on safety aspects. So here 725, 710 zone is where we have multiple supports. And in case if it manages to cross 800, then probably we can see a next leg of up move in Indian hotel. So it's offering basically a buying opportunity or accumulation opportunity in a prevailing market scenario where uncertainty is still high. तो देखिए जैसे सिप्ला के तर्ज पे कि हमने बात की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, बेसिकली आपका इस मार्केट में आप ब्रेकआउट अगर प्ले करते हैं तो वो फेल होंगे, बहुत चांस होगा कि आपको स्टॉक पहले ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, फॉर सम रीजन और दी अदर आप एंटर करेंगे और उसके बाद स्टॉक फिजल आउट हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ट्रेंड के अपोजिट हम जा रहे हैं। मार्केट का ट्रेंड अगर नेगेटिव है, वो करेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली फिर ज्यादातर सारे स्टॉक्स आपके उसी ट्रेंड को ही लार्जली फॉलो करते हैं। हो सकता है बाद में वो स्टॉक दोबारा से रिकवर कर जाए, बट अभी के लिए चैलेंजिंग पार्ट ये हो जाता है कि पोजीशन को कैसे मैनेज करें इन सबके बीच में। तो सेफ्टी को ज्यादा ध्यान रखिए। मीन्स जहां पे कि
आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में जितनी बार भी गिरावट आई है उस लेवल्स के पास में बाइंग आ जाती है, और रिकवरी आएगी, जब तेजी आएगी तो फिर ये एक अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इंडियन होटल एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि हम देख रहे हैं इस तरीके का पैटर्न इमर्ज होते हुए, ये काफी टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 725 किस साइड पे आपका इसका लोअर बैंड है, और ऊपर पे करीब 775 से लेकर 780 अपर बैंड, तो इसी जोन में ये घूम रहा है। इस बार दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा है रिकवरी का, और जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये अभी विद प्राइस एक्शन, पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही आपको यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन का कैंडिडेट इंडियन होटल हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। मे भी शायद नेक्स्ट वीक ना चले, बट उसके आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा मूव दिख जाए। एक्यूमुलेशन के कैंडिडेट के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं इंडियन होटल को। लास्टली ऑन द लिस्ट, मारुति। सो ऑटो as a pack, I would say, has outperformed so far in this recent decline specifically. And M&M, Eicher, TVS, and now finally Maruti is participating in the move. So here it's a continuation pattern which is forming a triangle pattern. The similar to what we were seeing in Indian Hotel, but it's more of like base formation before the breakout. As you can see that around 12 and 1220, 1225 is something that it has spent noticeable time, and then we are seeing this recovery. So once we cross 1325, we'll have a confirmation which could trigger the strong directional move in Maruti. So here also in a market like this, wherein we are not sure whether this consolidation might continue or whether we are going to see a reversal, accumulating such stock might result in good profits in the coming weeks, in coming months. तो देखिए लास्टली अगर हम बात करें तो ऑटो काउंटर्स की अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस पूरी डिक्लाइन में, जहां पे कि टीवीएस, आइशर और एमएनएम खासतौर से इन तीनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हीरो मोटो को हम कैसे बोल सकते हैं, काफी स्ट्रांगली उसमें रिकवरी आई, और हमने कुछ 2 वीक पहले ने इसी वेबिनार में बात की थी जब ये चलना शुरू भी नहीं हुआ था। तो उसी तरीके से अब मारुति में इंडिकेशन आ रहे हैं कि यहाँ पे अब जो इसका कंसोलिडेशन का टाइम था, रेंज का टाइम था, वो खत्म हुआ। अब यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में एक अच्छी तेजी की। तो यहाँ पे इस मार्केट सिनेरियो को यूटिलाइज करिए टाइम को, कि कैश में डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक्यूमुलेट करें बेसिस योर रिस्क एपेटाइट, राइट। सो जस्ट टू सम इट अप, Nifty banking index, cautiously positive view. For confirmation, we need a close above 24,800 mark in Nifty, and Bank Nifty should hold 54,900. Stock specific, Cipla, Maruti and Indian Hotel is something that we have discussed. देखिए इस पूरे उसमें जो 3 बड़ी बातें, पहला कि 24,800 के ऊपर निफ्टी का निकलना एक कंफर्मेशन होगा शॉर्ट टर्म रिकवरी को फर्दर स्ट्रेंथन होने का, और उस बीच में 54,900 बैंक निफ्टी को होल्ड करना है। तो ये 2 लेवल आपको ध्यान रखने हैं, 24,800 और 54,900 निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की कि जहां पे सेफ्टी है उसको आप ज्यादा फोकस करें, तो सिप्ला, इंडियन होटल और मारुति कुछ एक ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे कि अपने को अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है टू एक्यूमुलेट, right? So this is all from the presentation part. Now let's do a quick feedback poll. एक छोटा सा फीडबैक है, तो आप अपना फीडबैक शेयर करिए। उसके बाद जो भी सवाल है आपका, Q&A बटन है आपकी स्क्रीन पे, यू कैन यूज दैट बटन एंड शेयर योर फीडबैक्स। सॉरी, शेयर योर क्वेश्चंस। Q&A बटन है, you can use that Q&A button.
Those who are done with the feedback, they can start posting their questions using that Q&A button. And please avoid stock-specific queries to start with. In case if the time allows, definitely we'll try to consider a few stock-specific queries also. But restrict your questions to the sectors, themes, whatever you feel like, knowing, and that would help the others also to plan their next week. Those who are done with the feedback, they can start posting their questions. जिनका feedback हो गया है वो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं. Q&A का बटन एक क्वेश्चन मार्क का एक साइन के साथ है, उसको दबा के आप लिख सकते हैं अपने सवाल को. Okay, so we are almost done with the feedback responses now. So let's start with Q&A. See, stock specific queries I have requested. So in case अपने को time allow करेगा, definitely we might answer some of these stock specific queries जो कि मैंने पहले भी बताया. अभी पहले कोई sector specific अगर कोई सवाल है. Okay, so the first question that we have on IT space. So IT, despite the sharp correction, in the recent month, still there is no signs of recovery or bottom formation yet. What it means is that it might consolidate further or witness decline. It's not a very clear trend that we have for the Nifty IT index so far. Today it was a day where Infosys was making an attempt of rebound, but it couldn't sustain. So we are still trading below all the crucial averages, when it comes to the IT. Weekly basis, roughly around 34,000 mark, or rather, to be precise, 33,700 is what we have the next support for the IT index, which is 1,000 points away from the current area. So as of now, avoid aggressive short-term trading position when it comes to IT. And if you have existing positions and the time horizon is long-term, you may stay put, especially with the index heavyweights like HCL, TCS, Infosys. But avoid adding to your loss-making position if the view is short-term. Okay. Okay, next we have agrochemical shares only rallies is on the high. Other shares now came down 15-20%, like insecticide, PI. So Snehash has this query that agrochemical stocks. I need to really check. Are we actually holding those gains in the agrochemical space also or not? No, in fact, I guess your query is that why we are seeing this decline, because they have also declined sharply, like PI 13% down in this month so far. And let's say insecticides. Yes, insecticide also a very sharp decline in this week. So again, that is what I was referring to, during the presentation, that while we are seeing possibility of a base formation in index or an attempt of a rebound also, we are not very sure about mid cap and small cap yet. What it means is that probably after this recent decline, we might see the underperformance from mid cap and small cap, and that's hold true for across sectors, including the agrochemical space. So, see, in a current market scenario or otherwise also, even if let's say market is outrightly bullish and we are seeing a newer high with every passing day, at times market
gives you the opportunity to exit at a fair price with marginal losses. But in case if you are not uh, comfortable taking losses despite seeing the overall carnage across sectors, then such kind of sharp swings uh, presents you with the different surprises. So I would suggest, Snehansh, that for the existing position after this sharp decline, there could be an attempt of a rebound or recovery post this decline, and that should be utilized to reduce your position if the view is short term. And going forward, whenever you are trading, don't expect your trade to be in profit. First, think about managing your position when the stock or index would move in the opposite direction to your trade, and the other factors would automatically take care of your profits, right? So for both uh, insecticide, PI, or other agrochemical counters, after this sharp decline, there could be some consolidation followed by a recovery. So utilize this recovery to reduce, cause indications are in the favor that we have already seen a near-term top, because they've tested their recent previous highs also. So it's a normal reaction, and they're very volatile. We all know that agri-related stocks, agrochemical stocks, they are very volatile. So please make sure that we are very specific about our exits also. Okay, Mr. Rajesh Lali, thank you for this message, and I feel also in a similar way that I should not miss any session, but due to certain uh, personal challenges, I couldn't attend the last session. But yes, this is how things work. And railways, yes. So railways also problem situation. You have rightly pointed out, and still there is no sign of a recovery or a reversal yet. So most of the stock, in fact, last week I was flipping charts, RVNL and Rail 10 and other stocks. Still, there is no sign of reversal. In fact, post numbers, Titagarh, I guess, witnessed some respite, but majority of the stocks, still there is no sign of recovery or a reversal. So railways, defense, both back, I believe, is something that you should be cautious of until we have a clarity over decisive sign of reversal or at least a pause. In certain cases, cause we are not seeing even pause, we are seeing continuous decline. Means in the defense stocks, yes, we were seeing some sign of recovery or rebound of late, but in the railways, there is no sign as such. So it's prudent that one should refrain from any fresh long positions or adding to your loss making positions in railways until we see a clear sign going ahead. Okay, Santosh ji has this question on future prospects of lounge and restaurant business. So yes, we have had a list of stocks wherein there were certain counters from the recent listing and in past also, but the performance has not been very encouraging for most of the names, right? So be it the quick surveys or otherwise also. So I would suggest that in this space, you should rather look for stocks, hotel stocks or aviation,
like Indigo, obviously, we don't have any other choice when it comes to aviation. And stocks like Lemon Tree, Indian Hotel, Chalet, right? So this space, I feel that one should refrain. Uh, if the view is long term, also I feel that your view should be 4 5 years, maybe, because then we'll have this kind of maybe a different model altogether for profitably running those lounges, and uh, we might see the uptick in restaurant business also. So discretionary part is there, means it's not that some of these listed players are not profitable, but it's not reflecting as such in the overall broader space. So it's prudent that one should refrain from anything which is niche, and focus on quality counters which are available at good bargain after this recent decline. Right. So hope this helps. Thank you, Jitendra ji, for your feedback. Okay. Okay. So before we conclude, just to make sure that we utilize the next leg of recovery. In the recovery phase, first signs would be in, means, just make a list of the stocks from like 4 5 stocks from all the sectors, like IT, not IT right now, auto, energy, FMCG, uh, and see which stock start recovering first. And once we have the confirmation in the market, let's say that the market trend has reversed, stick to those names and they'll be the outperformer in the next leg. So start this exercise from now on to see that is it good to add stocks which are at the 52-week low or stocks which are trading at the 52-week high. You will see the difference. So on this note, we'll end this session. आप सभी का धन्यवाद कि आप जुड़े, और नेक्स्ट वीक तो पूरा वीक है अपना, तो 22 तारीख को we'll connect again. Till then, take care. Thank you and wish you all happy Independence.